Now, our poem, The Voice of the Rain by Walt Whitman. Now, he is the poet. It is the shower, light rain, and the poet asks a question from the rain. Hello? Yes, sir. Yes, sir. चलिए. Now, the poet asks a question from the falling showers. Who art thou? Thou means you. Who are you? Now, which stands to tell, give me an answer. As you translated, actually it was very difficult to tell who it was. Yeah, who it is. कौन है ये? It is very difficult to tell, but the poet gets an answer. The poet gets an answer, and the answer is translated here. The answer is translated here. बताना बहुत मुश्किल है कि वह कौन है. फिर भी whatever the answer is given by the rain, जो आंसर रेन ने दिया था पोएट को, उसका अनुवाद, उसका ट्रांसलेशन यहाँ पर दिया गया है. Now the rain replies poet. Rain answers poet. I am the poem of earth. I am the song of earth. मैं धरती का गीत हूँ. Said the voice of the rain. Said the voice means the voice answers the poet that she is the song of the rain, eternal. I am immortal. I am immortal. Immortal means amar. Okay, the rain never dies. Okay, so it is eternal, it is immortal. I rise, I take my birth. I rise means I take my birth. Impalpable. This word will be explained later. इस वर्ड को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा. पहले I rise out of the land. I take my formation. I take my form from the land and the bottomless sea. मेरी उत्पत्ति कहां से होती है? I take my birth from the land and from the bottomless sea. Okay, when the sun rays falls on the surface of the water of the ocean, the water gets evaporated. पानी भाप बनना शुरू हो जाता है, and it gets collected in the sky. और ऊपर जाकर इकट्ठा हो जाता है. Getting or not? Now listen very carefully. Eternal, I am immortal. I rise, I take my birth from the land, जमीन से, as well as the bottomless sea. I take my birth from the land and from the bottomless sea. अथाह सागर से और धरती से मेरा जन्म होता है. Now word comes impalpable. Okay, but I remain unseen. I remain untouched. Okay, no one can touch me. No one can see me when I take my birth. Or not? Means the formation of rain. The formation of rain cannot be touched. It means it is untouched. इसे कोई छू नहीं सकता. ये अस्पष्ट रहती है, ये अनटच्ड रहती है. Upward to heaven. Now I rise or I go to heaven. I go to heaven. मैं ऊपर आकाश की ओर यानी मैं स्वर्ग की ओर जाती हूँ. Okay, wheels vaguely formed, and there I take a different form. There I take my different form. वहां मेरा रूप कुछ अलग होता है. Okay, there is no significant. Okay, there is no particular formation, particular shape of the clouds or the stream. There is no particular shape of the cloud or the stream. किसी भाग की या किसी बादल की कोई particular shape नहीं होती है. Or not? So I take my birth from the land and from the bottomless sea and go to the sky.
इट मीन्स हेवन, मैं स्वर्ग में जाती हूँ या आकाश की तरफ जाती हूँ। वेयर वेगली फॉर्म्ड, वेयर देयर माई फॉर्म, माई शेप इज क्वाइट डिफरेंट। ओके, देर इज नो पर्टिकुलर शेप ऑफ माई फॉर्मेशन, मेरे फॉर्मेशन की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है। ऑल टूगेदर चेंज एंड आई हैव अ वेरी चेंज फॉर्मेशन। आई हैव अ चेंज फॉर्मेशन, वह मेरा स्वरूप बिल्कुल बदला हुआ सा होता है। एंड यट द सेम, but my nature remains the same, my behavior remains the same. Can you not? चलिए, I descend to leave the droughts. I descend when I come on the earth. When I fall on the earth, जब मैं जमीन पर गिरती हूँ, when it rains on the earth, तब धरती पर बारिश होती है। To live, to wash the droughts. ड्रॉट कहते हैं ड्राइनेस को, सूखा। जब बारिश नहीं होती वह सूखा पड़ जाता है। So when the rain says that when it falls on the earth, okay, it washes away the drought. वो सूखा बिल्कुल खत्म कर देती है। It removes the drought. और it makes every particle of the earth wet. बेटे mute your phone. Mute your phone. शादी होगी ना, Mute your phone. शगुन म्यूट कर ले। Okay, बेटा mute your phone. शीतल के आगे माइक बंद कर। माइक बंद हो गया। Yes, now the rain says that when it falls on the earth, it removes the drought. वो सूखे को बिल्कुल रिमूव कर देती है, वॉश कर देती है। Atoms and dust layers of the globe, and it makes each and every particle of the earth wet. It makes each and every particle of the earth wet. धरती के कण कण को बारिश गीला कर देती है। Getting or not? Okay. And all that in them without me were seeds, and in the layers of the dust the farmers grow, the farmers sow seeds. धरती में क्या करते हैं किसान? बीज बोते हैं। The farmers sows seeds in the land, and the farmer waits for the rain, and when the rain falls on the earth, the germination starts taking place in the seed. Without rain, there is no germination in the seeds. जब किसान बीज बोते हैं, बारिश का वेट करते हैं, बारिश के द्वारा ही बीज अंकुरित होता है, उसमें से नन्हा पौधा बाहर आता है। When if there will be no rain, अगर बारिश नहीं होगी तो there will be no germination in the seeds. तो बीज में कोई जर्मिनेशन नहीं होगा। ओके, इट विल रिमेन हिडन इन द लैंड। ओके, तो वो जमीन में ही छुपा पड़ा रहेगा until the rain does not come on the earth. जब तक बारिश धरती पर नहीं आती है। So I am telling you once again, okay, I descend to leave the droughts, I fall on the earth to remove the droughts. मैं धरती पर आती हूँ, ड्रॉट को, सूखे को दूर कर देती हूँ। Atoms and dust layer of the globe, and each and every particle of the earth and dust, okay, I make it wet. मैं उसे गीला कर देती हूँ, मैं धरती के कण कण को गीला कर देती हूँ। और and all that in them without me, and all the seeds which are sowed in the land, वो सभी बीज जो धरती के अंदर बोए जाते हैं। Without me, मेरे बिना, without water, without rain, were seeds only. They remain only seeds. It means if there will be no rain, or if there is no falling of rain on the earth, the seeds remain seed. अगर बारिश धरती पर नहीं होगी तो सीड रहता है। There will be no germination in the seeds. तो बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा।
So I am responsible. The rain is responsible for the germination of seeds. Getting or not? तो सीड्स में जर्मिनेशन के लिए, अंकुरित के लिए कौन जिम्मेदार है? बारिश. Getting or not? And latent, without me, the seed remain seed. Latent, they remain hidden. मेरे बिना वो जमीन के अंदर चुपचाप पड़े रहते हैं. They are quite inactive. बिल्कुल निष्क्रिय से जमीन के अंदर पड़े रहते हैं. Unborn. Unborn means no germination takes place in them without me. मेरे बिना बीजों में कोई जर्मिनेशन नहीं हो पाता. And forever, by day and night, either it is a day or night, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमेशा हमेशा के लिए. I give back life to my own origin. Origin means पैदाइशी स्थान. The earth is the birthplace of the rain. The earth is the birthplace of the rain. And when the rain falls back on the earth, and when the rain falls back on the earth, it gives the life to its birthplace. It gives life to its birthplace. Earth is the birthplace of rain. Getting or not? And when the rain falls back on the earth, जब बारिश धरती पर दोबारा से गिरती है, ओके, इट गिव्स लाइफ टू द अर्थ. वो धरती को ही जीवन देती है. इट गिव्स अ न्यू लाइफ टू अर्थ. वो धरती को ही नया जीवन देती है. What happens in the summer season when we are suffered with scorching heat? We wait for rain, and the rain takes birth from the earth in the form of steam. It gets collected in the sky, and again it falls on the earth. So land is the birthplace of the rain. First point, it gets collected in the sky, and when it falls back on the earth, it gives life. It gives life back to the earth. Okay, धरती से बनती है और धरती को ही दोबारा जीवन, धरती को ही उसको दोबारा जीवन प्रदान कर देती है. Getting or not? Okay then. And make pure and beautify it, and it makes pure everything. The rain makes pure everything of the earth, and rain also beautifies. The rain also beautifies each and every object of the earth. बारिश ही धरती को प्योर करती है, और बारिश ही धरती के हर ऑब्जेक्ट को सुंदर बना देती है. As you know, all the trees and the plants, okay, removes dust through the rain. जब बारिश होती है तो धरती प्लांट्स की जो धूल वगैरह होती है जब साफ हो जाती है. It looks quite new. Everything looks quite new, and the trees are the ornaments of the earth. Plants are the ornaments of earth, and the earth makes everything beautiful. In this way, the rain increases the beauty of earth. Getting or not? चलिए, for song, no doubt, rain is a song. Rain has been compared as a song. Song just comes out from the heart of the poet. The song comes out from the heart of the poet. Okay? Yes, issuing from its birthplace. The birthplace of the song, the poem, is the heart of the poet. And now this song is heard by everyone. इस song को हर व्यक्ति सुनता है. Okay. So, and after fulfillment, wandering, and when this song is heard by everyone, it comes back to its original place. It comes back to the heart of the poet.
सॉन्ग हो गया, पोयम हो गई, सब कहां से बनती है? फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पोएट, पोएट के मन से, पोएट के हृदय से ये सब वर्ड्स निकल कर आते हैं, चाहे वो पोयम का फॉर्म हो या वो सॉन्ग का फॉर्म हो। यानी नॉट एंड पोयम और सॉन्ग इज हर्ड बाय एवरीवन, हर व्यक्ति पोयम को सुनता है, गीतों को सुनता है। एंड वंस अगेन दैट पोयम्स कम्स बैक टू द हार्ट ऑफ द पोएट, और फिर से ये पोयम कवि के हृदय में समा जाती है। यानी नॉट इन द सेम वे, in the same way the rain has been compared with the songs, okay, issuing from its birthplace. Now the rain takes place, that the rain takes place its birth from the earth. The rain takes the rain takes its birth on the earth. Rain takes its birth on the earth. धरती, बारिश धरती से अपना जन्म लेती है। The origin place of the rain is earth. not the origin place, उत्पत्ति का स्थान, the origin place of the rain is earth. Okay, and after completing all its work, okay, it comes back to earth. दोबारा से धरती पर आती है। I am telling you the original place of the rain is earth. The rain takes its birth on the earth. Now it goes upward in the sky, okay, and completing all its formation, all its activities, once again it falls on the earth. दोबारा से ये धरती पर गिरती है, तो जहां से इसका बर्थ प्लेस शुरू होता है वहीं जाकर ये दोबारा से समा जाती है। Not getting? As you people come to school from your home, okay, and completing all the activities, you go back to your home. Not in the same way the formation of the earth takes place on this earth, and after completing all its work the rain comes back to its earth. जहां से इसकी पैदाइश होती है दोबारा वहीं पर चली आती है, वहीं समा जाती है। नॉट? चलिए, सो फॉर सॉन्ग इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, वो गीत जो इसके बर्थ प्लेस से शुरू होता है, आफ्टर फुलफिलमेंट, after completing all the activities, wandering, after moving in every direction, okay, it comes back to its birthplace. दोबारा से अपने बर्थ प्लेस पर वापस चली आती है। Ragged or unragged, the song is either heard or unheard. Song, suppose this song, it is song, चाहे आपने कोई चाहे सॉन्ग को सुना जाए या ना सुना जाए। Duly with love returns, but the song gets back to its place with providing love to everyone. Song, अच्छा, if a song is good, okay, you like it. If a song is good, you like it. You start singing. The song gives you some love, gives you some admiration. The song gives you some peace also. In the same way, after completing all the work, the rain, it comes back to the earth, providing love to everything. हर थिंग को प्रेम प्रदान करने के बाद, प्रोवाइडिंग अफेक्शन टू एवरीथिंग, हर चीज को लगाव प्रदान करने के बाद, इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिन प्लेस, वो दोबारा से अपने ओरिजिन प्लेस पर, अपने बर्थ प्लेस पर वापस चली जाती। Not? I am telling you once again, for song, the poem is just like a song issuing from its birthplace. The song, the birthplace of the song is the poet's heart, because the poet expresses his feelings in his poem. Okay. After fulfillment, now
that poem completes its work. The poem is read by everyone. Okay. Wandering means this poem is read by me. Yes, sir. Tomorrow by you, and day after tomorrow by you. Because so the poem is heard by everyone. In the same way, the rain is the rain comes back to its original place after completing all its work. It provides love. It provides affection to everything. Okay, the song is heard or unheard. Either the song is heard or unheard. क्या गीत को सुना जाए या ना सुना जाए, it comes back to the heart of the poet. तो दोबारा से पोएट के हार्ट में प्रवेश कर जाता है. In the same way, the rain takes birth on the land and completing all its tasks. And completing all its tasks and giving the affection to everything, every particle of the earth, it comes back to its birthplace. दोबारा से अपने बर्थ प्लेस पर वापस चली आती. Getting or not? कुछ समझ में आया बेटा? हेलो बच्चों. Yes, sir. बेटा poem is clear to all of you? Yes, उसको sir. दोबारा से लें. Yes, sir. Okay. Once again, I am telling you, the poet asks the rain, "Who are you?" The rain replies the poet that it is the poem of earth. कि मैं धरती की कविता हूँ. Okay. I take my birth from the land and the bottomless sea. Okay. But I can't be touched. मुझे छुआ नहीं जा सकता. I am immortal. मैं अमर हूँ. Okay, I never dies. मैं कभी नहीं मरती हूँ. When I fall on the earth from the heaven, I wash away or I remove the dross. मैं सूखे को दूर कर देती हूँ. I make each and every particle of the earth wet. मैं धरती के कण को गीला कर देती हूँ. The seeds are sown by the farmers in the land, and without me, the seeds remain seed. They remain hidden. No germination takes place in the seed without me. मेरे बिना बीज रहते हैं, छुपे रहते हैं धरती के अंदर और उनको जर्मिनेशन नहीं हो पाता. Okay, it means I give life to each and every particle of the earth. मैं धरती के कण को जीवन देती हूँ, जीवन प्रदान करती हूँ. Getting or not? Okay then. Forever, I am present forever. I never die. Okay, day by day and night, I give back life to my own origins. Either it is a day or the night, we can't stop the rain. Okay, दिन हो या रात हम रेन को रोक नहीं सकते. So when it comes back on the earth, it means it gives life back to the earth. मैं धरती से पैदा होती हूँ और जब धरती पर आती हूँ तो दोबारा धरती को जीवन प्रदान कर देती हूँ. Because rain is very important for the life of the earth. Getting or not? बारिश धरती के जीवन के लिए एक क्या है? अमृत है, गुण है, एक वरदान है. Getting or not? Okay. So and I make everything pure. The rain makes everything pure on this earth, and the rain also beautifies each and every article of the earth. ऐसे ही बारिश धरती के कण कण को खूबसूरत बना देती है, सुंदर बना देती है. Okay? For song, it is just like a song. Okay? Issuing from the birthplace, the earth takes its birth from the land. जमीन धरती से इसका जन्म होता है. Getting or not? And after completing all its activities, it comes back on the earth again. जहाँ से शुरू होती है वहीं धरती पर समा जाती है.
Getting or not? Okay. Song, ragged or unragged song. Either it is heard or unheard. चाहे आप उसे सुने या ना सुने, it duly provides you affection, I love. Okay, ये song आपको अपना स्नेह प्रदान करता है. In the same way, either you see the rain or not, the rain provides you affection. The rain provides you a due affection. The rain जो होती है, बारिश जो होती है, आपको affection, एक स्नेह प्रदान करती है. Okay, and we feel happy when the rain comes on the earth. Okay, हम बहुत खुश होते हैं जब धरती पर बारिश होती है. Because we wait eagerly for the rain. We wait eagerly for the rain. हम बड़ी बेचैनी से धरती बारिश का इंतजार करते हैं. Because it removes all the dryness. क्योंकि ये सभी सूखेपन को दूर कर देती. Getting or not? Okay, here in this poem there is a poetic device. It is a figure of speech, and the figure of speech is personification. Here is personification. Because here the rain works as a living thing. Personification means when an object is treated like a living thing. जब हम किसी थिंग को एक लिविंग थिंग के रूप में ट्रीट करते हैं, वहां पर्सोनिफिकेशन होता है. इसे बोलते हैं मानवीय अलंकार. क्या बोलते हैं इसको? मानवीय अलंकार. So here the rain is personified. Here the rain is personified by the poet. पोएट ने रेन को पर्सोनिफाइड कर दिया है. रेन कोई बोलती है, बट here the rain is replying the poet. लेकिन यहाँ रेन पोएट को जवाब दे रही है. So here rain is personified. Here the poetic device is a personification. Getting or not? हेलो बच्चों. Yes, sir.